बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आइलेट्स रीडिंग पैसेज टू लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। यू हैव टू मैच द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विद द पैराग्राफ्स। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं, एक या दो हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं नंबर ऑफ पैराग्राफ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस हैं, जो टोटल पैराग्राफ्स हैं, वो है A to G। ओके, कितने हैं यहाँ पे? आपके पास टोटल है 7 पैराग्राफ्स। ओके, और आपके पास जो हेडिंग्स हैं वो है 9। मीन्स जो 2 हेडिंग्स हैं वो आपके ट्रैप्स हैं। ओके, वो आपको घुमाएंगी 1 से 2 पैराग्राफ में। लेकिन किस तरह से हमने पैराग्राफ को समझना है, किस तरह से हेडिंग्स को रिफ्रेश करना है, वो हम समझते हैं, ताकि हमारी सारी की सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स 10 by 10 करेक्ट हों। ओके ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स इन क्वेश्चन 14 to 26। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में आपको यही कहा जाएगा कि आपने 20 मिनट स्पेंड करने हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने टेस्ट 1 में 15 मिनट स्पेंड करने हैं, टेस्ट 2 में आपने 20 मिनट स्पेंड करने हैं, और टेस्ट 3 में हो सकता है आपके 20 to 25 मिनट्स लग जाएं। कोशिश आपने करनी है कि 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज 25 मिनट्स आपने बचा के रखने हैं टेस्ट 3 के लिए। ओके, सो क्वेश्चन 14 to 20 क्या है? रीडिंग पैसेज 2 हैज 7 पैराग्राफ्स A to G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. These are the list of headings. Write the correct number. Okay, one more thing. You have to write these numerals in the answer sheet. Okay, you can't write answer heading 1 is correct or heading 2 is correct. Okay, no, you have to write this one. Okay, another thing is that these list of headings never come in the arrangement. Okay, there is no arrangement. The heading can be from any kind of paragraph. For example, the heading 1 can match to last paragraph or the first paragraph or from the middle paragraph. It all depends on the way of paragraphs. That now we are going to discuss how we have to read the list of headings and paragraphs and how to find the exact answer. Okay, so let's start करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग से। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ओके, इस तरह से रीड आउट करना है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ये लिस्ट ऑफ हेडिंग सारी की सारी याद हो और आपको लगे कि जी ये पैराग्राफ जो है उस हेडिंग से मैच कर रहे हैं। ओके, देन आपने वहाँ से मैचिंग करनी है, और अगर उसको मैच करने से पहले आपने बाकी के जो हेडिंग्स हैं वो देख लेनी है कि वो मैच ना करती हों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ। पिरामिड से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स और एरियाज को डिस्कस किया जाएगा। ओके, पिरामिड इटसेल्फ, एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व। देयर विल बी एनी डिफिकल्ट टास्क। A king who saved his people. King who saved his people. A single certainty among other less definite facts. बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसमें जो एक सिंगल सर्टेनिटी होगी वो यहाँ पे प्रूव करेगी among other less definite facts. Okay, less definite facts, there is a single certainty. An overview of the external buildings and areas. Overview. Okay, there will be overview of buildings and areas. A pyramid design that others copied. Okay, pyramid will be copied or followed by other ones. An idea for changing the design of burial structures. Burial structures, उनके डिज़ाइन को चेंज करने का आइडिया दिया जाएगा. An incredible experience despite the few remains. There will be remains, but an incredible or bad or amazing experience. Okay, the answers to some unexpected questions. Answers to some unexpected questions. Alright, now you have to keep these headings in your mind and start reading the paragraph. Question 14 is from paragraph A. Okay, let's open both sides. The step pyramid of Djoser. Now you have to read the paragraph A and then you have to match the list of headings. Let's start reading.
The pyramids are the most famous monuments of ancient Egypt and still hold enormous interest for people in the present day. These grand, impressive tributes to the memory of the Egyptian kings have become linked with the country, even though other cultures such as Chinese and Mayan also built pyramids. The evolution of pyramids have been argued about the centuries. However, there is no question it began with one monument to one king designed by one brilliant architect. Okay. However, there is no question that. As far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect. कहता है कि यहाँ पे सवाए वन मोन्यूमेंट के देर वॉज नो क्वेश्चन, मीन्स किसी फैक्ट की ज़रूरत नहीं थी सवाए वन मोन्यूमेंट के. अब यहाँ पे देखें एक और चीज़, आपने पैराग्राफ को स्किम रीडिंग से पढ़ना है, ठीक है. यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस में आपको आंसर मिल जाता है. अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ आ रहा फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस से, देन आप जल्दी से इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो रीड आउट कर लें, सिर्फ आइडिया लेने के लिए और पैराग्राफ को पैराफ्रेज या रिफ्रेज करने के लिए. ओके. अब यहाँ पे देखें लास्ट लाइन में हमें क्या समझ आ रही है, देयर इज़ नो क्वेश्चन बट इट बिगेन विद वन मोन्यूमेंट मीन्स अ सिंगल सर्टेनिटी. सो देयर वाज अ हेडिंग about single certainty. Here it is, a single certainty among other less definite facts. Okay, यहाँ पे देखें there is no question that but it began with one monument to one king design means there is only one certainty that was required around among other less definite facts, so that will be the answer. Okay. अब यहाँ पे इसको करेक्ट करने से पहले आपने बाकी की हेडिंग देख लेनी है, अदर मैच तो नहीं कर रही. एरियाज आर्टिफैक्ट्स नो, डिफिकल्ट टास्क नो, देयर वाज नो डिफिकल्ट टास्क, किंग हु सेव्ड हिज पीपल नो, ओवरव्यू नो, pyramid design at others no, idea for changing barrier structure no, the answers to some unexpected question no. But अब अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपने कैसे चेक करना है, ये देखिए लास्ट पॉइंट में हमें अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे क्या था, देयर इज़ नो क्वेश्चन मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं है तो अनएक्सपेक्टेड आंसर्स कैसे मिलेंगे. ओके. तो ये भी नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 0.4. सो दैट विल बी द आंसर. यहाँ से आपने इसको कर देना है कट, सो दैट हम दोबारा इसको ना करें और यहाँ पे आपने लिख देना है आंसर. ओके. ऑलराइट. नो स्टार्ट रीडिंग पैराग्राफ बी. Djoser was the first king of the who built in stone. Prior to Djoser's reign, okay, when the person was buried, okay, it will be related to burial. Okay. For reasons which remain unclear, Djoser's main official, whose name was Imhotep, conceived of building a taller, more impressive tomb for his king by stacking stone slabs on top of one another, progressively making them smaller to form the shape known as the step pyramid. यहाँ पे देखो उसने आइडिया दिया है कि कैसे उस बरियर स्ट्रक्चर को चेंज करना है. ओके. देखिए टॉम्स वर रेक्टेंगुलर monuments made of dried clay bricks which covered underground passages where the deceased person was buried. Okay. यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, बरियर स्ट्रक्चर से रिलेटेड. अब फर्स्ट टाइम आपको होता है कि आपको पहले सेंटेंस पढ़ते ही आंसर मिल जाता है. जैसे हमें यहाँ पर पता है कि हमारे पास एक हेडिंग किससे रिलेटेड है, बरियर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बट यू नीड टू फाइंड द करेक्ट आंसर. फर्स्ट टाइम आप ट्रैप भी कर जाते हो. ओके. सो बट हे इट इज़ क्लियर दैट there is related information about burial structures. Then for reasons which remain unclear, Djoser's main official, whose name was this, conceived of building a taller, ये देखिए यहाँ पे आइडिया बता रहा है, more impressive tomb and that. Okay. So it is all related to idea for changing the design of burial structures. So answer 7 is correct for paragraph B. Now cut this as well. Okay. Now paragraph C. The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century. It is known that the building process went through many different stages. Okay.
The weight of the enormous mass was a challenge for the builders. Okay, the weight of the enormous mass was a challenge for the builders means जब वो डिज़ाइनिंग कर रहे थे तो यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग टाइम वेट जो था इनॉर्मस मैथ का वो चैलेंज था उनके लिए. चैलेंज मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क था फॉर द बिल्डर्स मीन्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो काम कर रहे थे. तो यहाँ पे देखिए सिंपली किससे मैच कर रहा है, अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व. ओके, कैसे? वेट ऑफ द इनॉर्मस मैथ वाज अ चैलेंज मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क, फॉर द बिल्डर्स मीन्स फॉर दोज इन्वॉल्व. सो सेकेंड heading is correct answer for paragraph C. Okay, now cut this as well. Okay, now move on to paragraph D. You have to do skim reading. When finally completed, the step pyramid rose 62 meters high. Okay, 62 meters high and was the tallest structure of its time. Okay, ये देखिए इसमें इट कवर रीजन ऑफ 16 हेक्टर्स सराउंडेड बाय 10.5 मीटर्स. द वॉल हैड 13 फॉल्स डोर्स 750 मीटर्स लॉन्ग एंड दिस. इसमें सारा क्या बताया जा रहा है, ओवरव्यू दिया जा रहा है बिल्डिंग का. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था ओवरव्यू से रिलेटेड, एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग्स एंड एरिया. यू कैन रीड अगेन. This paragraph is totally related to buildings and overview of the building. Okay, how much there was length or width etc. Okay, you can see. So the answer is overview of the external buildings and areas, point 5. Okay, paragraph D का option heading number 5 is the correct answer. Now move to paragraph E. Okay, start reading this. You have 1 minute to read this paragraph. ओके, तो यहाँ से आपको क्या समझ आई है? यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा डाटा बताया जा रहा है पिरामिड के बारे में. ओके, ये देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, वन ऑफ द मोस्ट माइस्टीरियस डिस्कवरीज फाउंड इनसाइड द पिरामिड. इनसाइड द पिरामिड मीन्स यहाँ पे आपने एक हेडिंग पढ़ी थी पिरामिड इटसेल्फ. पिरामिड इटसेल्फ मीन्स इनसाइड द पिरामिड. तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि नहीं, ये हमने देखना है. एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स देखिए, ओवर विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन वेसल्स. ओके, दीज वेसल्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स डिस्कवर्ड इन प्लांट. और ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है? आर्टिफैक्ट से रिलेटेड, दैट वाज रिलेटेड टू पिरामिड इटसेल्फ. सो फॉर पैराग्राफ ई आंसर इज heading 1. Okay, this. So heading 1 is the answer, paragraph E. Now how many headings are left? 3, 6 and 7. Oh sorry, 8. Okay, let's read. Sorry, 9 is also there. Are 4 headings left and 2 questions are left. So let's read paragraph F. Unfortunately, all of the pictures and ethnic design of this doesn't amaze. This was thieves. There was enough left throughout the pyramid. Okay, it's all related to remains. Okay, the remains that were left. For example, grave goods and even his body was stolen at some point in the past, and all archeries found were a small number of its valuable overlooked by the thieves. Okay, small number of its valuables overlooked by the thieves. There was enough left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the
आर्चुअलिस्ट्स हु एक्सक्वेटेड इट मीन्स जिन्होंने इसको डिस्कवर किया वो इससे रिलेटेड अमेज भी थे, अमेज थे, हैरान थे। मीन्स यहाँ पे अमेजिंग से रिलेटेड एक हेडिंग थी। Okay, an incredible experience despite the few remains. Okay, let's read the last sentence again. There was enough left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the tourists who excavated it. Means it was related to remains that were left, and it was related to incredible experience. So this is the correct answer, option 8. That is related to paragraph F. ओके सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर। अब आपके पास पैराग्राफ लास्ट जी बचा है, ये देखें, यहाँ से इसको करते कट। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन लास्ट, लेट्स रीडिंग। The step pyramid was a revolutionary advance in architecture and became the archetype which all the other great pyramid builders of Egypt would follow. Would follow means copy. So there was a heading related to copy. A pyramid design that others copied. So in paragraph G, what they discussed about the design of pyramid, and the other will follow means the others will copy. So answer heading 6 is the answer for paragraph G. So this is the trick for finding the correct headings with the passage or with the paragraphs. You have to paraphrase the sentences. Usually sentence 1 and last sentence can provide you answer and match with the list of headings. Okay, so you have to exactly match with these list of headings, and you have to exclude the other headings as well. Okay, these are the answers.